Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Most important MCQs, MS PowerPoint, objective type. Start करते हैं जी. Which of the following is the latest versions of MS PowerPoint? 2010, 2013, 2016, 2019. Correct answer 2019. Which of the following is not valid version of MS PowerPoint? MS PowerPoint 2013, MS PowerPoint 2011, MS PowerPoint 2012, both B and C. Correct answer both B and C. File extension of PowerPoint document is PPTs, PPTX, PPTs, PPTX. So correct answer is C. Which tab is not available on left panel when we open an presentation? Slides, notes, none of above, outlines. Correct answer notes. PowerPoint is used. Option A, note outlines by teachers, presentations, communications of planning, all of above. All of above. Correct answer all of above. Dash controls all the main slides, control tasks for your presentation. Task pane, taskbar, control panel, font dialog box. Correct answer is A, task pane. Which of the following is not available in task pane? Master slides, slide design, slide layout, slide transition. Correct answer is A, master slide. In PowerPoint, we work slides, page, text box, all of above, text box. Correct answer, text box. Normally, slides are power portrait, landscape, none of above, both A and B. Correct answer is landscape. Normally, hand notes, notes are portrait, landscape, none of above, both A and B. Correct answer A, portrait. When we change the slide size by using design tab, transition tab, home tab, animation tab, correct answer A, design tab. Dash is used to apply motion effects to different objects of a slide. Transition tab, animation tab, design tab, slideshow tab. Correct answer is A, C, animation tab. Dash is used to apply visual effect that occurs when you move from one slide to next during a presentation. Transition tab, design tab, animation tab, slideshow tab. Correct answer A and transition tab. Question number 14. If we want to create photo album, we use insert tab, design tab, insert tab, insert tab. करेक्ट आंसर है इंसर्ट टैब इमेज ग्रुप्स. इंसर्ट टैब में और भी हैं जैसे कि इंसर्ट टैब में एलिस्ट्रेशन है, मेडियल है, डिज़ाइन ग्रुप है, जैसे इस तरह और भी हैं, लेकिन हम इसमें करेक्ट करेंगे इमेज ग्रुप. जी. क्वेश्चन नंबर 15. इफ़ वी इंसर्ट मीडिया क्लिप विद द स्लाइड वी यूज़ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. इंसर्ट टैब मेडियल ग्रुप, insert tab image group, insert tab design group, insert tab illustration group. Option D इसका आएगा जी. If we want to hide the slide we use slide show setup group. Transition tab, design tab, insert tab. इसमें आएगा जी slide show वाला setup group में. If we want to insert sound with the slide we use slide show, design tab, transition tab, insert tab. तो correct answer इसका आएगा C. If we want to change the color of the slide, we use View tab, Color group, View tab, Show group, View tab, Window group, both A and B. Correct answer B इसका आएगा View tab, Color group. Which file format can be added in presentation? JPG, dot GIF, WAV and dot MID, all of above is equal to all of above. Below
portion of slide is notes page, handout, layout, all of above. Notes page. Correct answer. Dash tab provides animation option, slideshow, insert, transitions, animations. Correct answer D. Animations. Dash tab provides slide design options. Design tab, insert tab, transitions, animations, design tab. To insert slide number, we use insert tab plus header and footer. Insert tab plus slide number. Insert text box and paste the number both A and B. Correct answer D, both A and B. To insert hyperlink, we use insert plus hyperlink, insert plus header and footer, control plus K, both A and C. Correct answer both A and C. Slide have text, title, shapes, animation, art, graphics, objects, shapes, clip, part, all of above. Correct answer D, all of above. PowerPoint design templates are stored in a file with extension .pot, .ppt, .gif, .gpg. Correct answer A, .pot. नेक्स्ट पढ़ते हैं जी. A file which contains a ready-made styles that can be used in presentation called autocorrect, wizard, template, all of above. This is template बने बनाए होते हैं, जैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो जिसने पढ़ा होगा ना प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट को पढ़ा होगा, तो उसके लिए MCQs को रिपीट करना कितना मुश्किल काम नहीं होगा. तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस को रिवीजन करने का एक तरीका होता है. डैश स्लाइड इज़ यूज फॉर अ टॉपिक और लेबल. टाइटल बोथ ए एंड बी, सब टाइटल नन ऑफ अबव. करेक्ट आंसर टाइटल. बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड इज़ टाइटल, सब टाइटल बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव. तो इसमें टाइटल आएगा इसका. A title slide offers that text boxes 2, 4, 1, 3. तो इसका करेक्ट आंसर 2 आएगा. If you want to insert your logo in the same position on every slide, you use copy and paste, master slide, cut and paste, handouts. तो मास्टर स्लाइड जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशंस में पावर पॉइंट बनाते वक्त. ये सुनिए, आज का लेक्चर था. मैं उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को मेरे साथ रिवाइज करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. इंशाल्लाह ताला हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे आपके PPSC एग्ज़ाम्स के लिए. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.